Hello everyone, myself Anil Kumar from CIMAGE Group of Institutions. In this video, today I am going to discuss about the trade barriers, and this topic is related to the international business. As we all know that international business happen to be across the boundaries, across the territories, between the two nations, and in such cases, there, there exist a lot of problems also. The problems like the discrimination and on the basis of the various parameters, the discrimination with the developing nations. And to stop this discrimination, the government had applied the various kinds of the trade barriers. The trade barriers can be defined as government-induced restrictions on international trade. They are imposed for various regions, primarily to protect the domestic market and to earn revenue. And this is why the trade barrier came into existence. If the barrier would not be there, the trade cannot be controlled. So it acts as a control mechanism for the whole of the international trade, either in terms of the import or in terms of the export. Now, we could discuss also about the types of the trade barriers. Some of the barriers I am going to discuss with you. The first form of the barrier, it is been termed as voluntary export restraints. Now, what does it mean all about? In this type of the trade barrier, a nation limits the amount of exports and increases the price of goods and the revenue. इस तरह के जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपोर्ट्स होते थे उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, एंड जस्ट टू कंट्रोल द डोमेस्टिक मार्केट, जस्ट टू सेव द डोमेस्टिक मार्केट। नाउ द अनदर ट्रेड बैरियर इज known as the regulatory trade barrier. And the regulatory trade barrier means what? The regulatory trade barriers are some legal barriers which hurdle the import of the products. Now, it is a kind of the trade barrier, the regulatory, which is been related to the legal process. Some kind of the legal interventions could be put as a barrier, and that barrier is known as regulatory barrier. These regulatory barriers are set by the government and specifically includes the product safety, the pollution standards. Say for example, there are safety ratings for the vehicles which need to be passed by the manufacturers to sell their products in the importing markets. किसी भी कंपनी को वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट सेफ्टी एंड द पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स that need to be qualified by the particular importers, and then only they could be go into the market. And this type of the barrier is known as regulatory trade barriers. Now, the another form of the barrier that is known as anti-dumping duty. What does it mean all about? Anti-dumping duties means some countries sometimes they decreases their prices of the product and they used to dump those products in the other country, and in this way they directly bring harm to the domestic company. To stop this type of the condition, the government imposed the anti-dumping duties. When anti-dumping duties means what? Exporters, in order to earn more profit, sell their products below the actual cost in the. As I told, it is against the dumping. डंपिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक्सपोर्टर कंट्री
किसी दूसरे कंट्री में अपने जो लागत मूल्य से भी कम में किसी प्रोडक्ट को जब बेचना शुरू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डंपिंग, लेकिन इससे सबसे ज्यादा घाटा जो होता है वो डोमेस्टिक कंपनी को होता है, और इसीलिए इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज करती है. द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम these dumped products imposes the anti-dumping duties. Now, the another form of the barriers, the trade barriers, that is known as the subsidies. Now, what does it mean? How the subsidies plays a crucial role? It acts as the support provided by the government to the firms manufacturing products to lower their production cost and become more competitive. सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट किया जाता है सब्सिडीज दे करके, सो दैट कि दे कुड बी कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, और उनके पास ये चांसेस रहे कि वो वहां के जो प्राइसेस है उसको compete कर सके. एंड दीज थिंग्स आर नोन एज द सब्सिडी, एंड सब्सिडी दे करके डोमेस्टिक कंपनी को बचाने का काम ये भी किया जाता है. Or as we all know that earlier also I had told that the tariffs are the taxes on imports. Tariffs are imposed to increase the price of imported products so that they are not consumed. And in this way, we can say that it could protect the domestic company. The tariff also include ad valorem taxes, which is very specific tax. ये एग्जाम्पल है एक स्पेसिफिक टैक्स का. स्पेसिफिक ड्यूटी बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स. ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में एक इम्पोज किया जाता है स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ये इम्पोज किया जाता है. एड वैलोरम ड्यूटी किसको बोलते हैं? दीज ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. When a fixed percentage of the value of a commodity is added as a tariff, it is known as ad valorem duty. जो वैल्यू होता है उसके ऊपर में जितना अमाउंट होता है, जितनी वैल्यूज होगी उसके ऊपर में क्या किया जाएगा? टैक्सेस को इम्पोज कर दिया जाएगा. द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज एडेड एज अ टैरिफ, और उसके वैल्यू जो कमोडिटीज के रूप में होंगे उनको क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाएगा. एडिशनली उनको उतना ज्यादा कमोडिटीज और देना पड़े, एंड दैट इज नोन एज ad valorem duties and taxes. These all are the forms of the duties, and hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कौन कौन सा ट्रेड बैरियर्स होता है and why we use the trade barriers. In my next video, I would like to discuss the advantages and many other non-tariff barriers, and hope कि ये पूरा टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स कैसे यूज होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे डोमेस्टिक जो डिस्क्रिमिनेशंस है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी जो टूल्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, इनको लगा करके और डोमेस्टिक कंपनीज को हम लोग सेव आउट कर सकते हैं, और इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी को हम लोग ग्रो करा सकते हैं. थैंक यू सो मच. Watch this video and like this video. Thank you.